So students, today we will have computers lesson number 3, that is PowerPoint. ठीक है. In our previous video I have explained you how to start the PowerPoint and how it looks like, और PowerPoint की जो सारी tools है we had. So now we are going to use some tools in the PowerPoint and create one presentation. Okay. And today we are going to have how to save the PowerPoint window. ठीक है. So let's start. So first of all, in our first video, lesson number 3, first video, I had explained you how to start the PowerPoint. So simply go to the start button, click on it, go to the all programs, point to the all programs simply, and then after pointing the all programs you will get the lots of programs. So we have to find the Microsoft Office first. Click on it, Microsoft Office. After clicking on it, you will got related to Microsoft Office lots of programs. So find out PowerPoint 2007. Yes, we had found it. Click on it. This is the PowerPoint window. Now by default PowerPoint opens with the blank presentation template, that is outline. It is very simple and easy to use when you are working in PowerPoint for the first time. It's very easy to work with it. On the slide pane, click on the placeholder that reads click to add title. So as you can see on the slide, first slide, our title slide, this is called the title slide. Just click to add the title, वहाँ पर mention कर रहा है. So just go to the placeholder and click on it. Now how to resize the placeholder, and so as you can see the outline of the placeholder, यहाँ पर आपको 6 dots मिलेंगे. You will got the 8 dots, sorry. This is used to resize the placeholder. देख रहे हैं आप? आपको माउस का लेफ्ट क्लिक, you have to hold the left mouse button and then drag it. ठीक है. So we are going to create one presentation related to the tiger. ठीक है. Just click in it, placeholder के अंदर क्लिक करेंगे. Then we are going to write in it the tiger. We are going to type the tiger. The tiger. ठीक है, हमने लिख लिए. Okay. Now the tiger, I wanted it into the capital letter, the whole capital letter. पर यहाँ पर जो है I have already written it. अब मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. नाउ एक सिंपल सा इजी वे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट सेलेक्ट द टाइगर. कंटेंट को सेलेक्ट करना है और आपके रिबन बार पे, होम के रिबन बार पे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है द चेंज केस. क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द लॉट्स ऑफ केसेस रिलेटेड टू. सो अपर केस इज यूज टू कैपिटलाइज द होल कंटेंट. क्लिक ऑन इट, सी वी विल गॉट द कैपिटल. हाँ, तो ये एक इजी वे भी है. या तो आप डायरेक्टली टाइगर पूरा कैपिटल में टाइप करो, और अगर बाय मिस्टेक टाइप कर दिए हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है केस चेंज केस. गो टू दैट. जैसा आपको आपका कंटेंट चाहिए, जस्ट टेक एनी वन ऑफ देम. नाउ क्लिक इन द प्लेस होल्डर दैट रीज क्लिक टू ऐड सब टाइटल. देख सकते हैं द टाइगर के बिलो बिल्कुल डाउन साइड पे click to add the subtitle. Click on it. Now we are going to add subtitle our national animal. The tiger is our national animal, so we are going to write our national animal. ठीक है, I've written the our national animal. Click anywhere to the on the slide pane to move the placeholder. रिमूव द प्लेस होल्डर. ये जो आपको आउटलाइन बॉक्स नज़र आ रही है, इसे रिमूव करने के लिए कि क्लिक एनीवेयर आउटसाइड. ठीक है.
This is our first slide. The status bar shows the slide. देखो, as you can see the status bar showing that we are using first slide. ठीक है, one slide. Slides pane are showing. Slides tab and slides and outline pane shows the thumbnails of the slide. The tiger, देखो यहाँ पर slides pane में हमें show कर रहा है the tiger and our national animal. When we go to the outline, see, ठीक है. So these slide and outline panes are used to show the shortcuts of your slide panes. On the slides and outline pane, so now this is the first slide of our presentation. Our presentation name is the tiger. So we had already made it one slide. Now we are going to save it. How to save the presentation? We are going to learn how to save the presentation. Without saving, if you close the file, it will show you the warning. Do you want to save the change you made to the presentation? If you click no, the file will disappear into your computer, from your computer. So click on yes to save the file. ठीक है, so it will show you the save as dialog box, a small dialog box. ठीक है, now you have to choose the location. So since this is the document, it is the document, so we are going to have document. ठीक है, by default always the Word document, text related document, notepad, presentation, Excel, these are documents are by default saved into the documents library. So simply we will go to the document library and give the name the tiger to the presentation and save it. ठीक है, सेव कर दिए. नाउ हमारी फाइल तो अब बंद हो गई है. माई फाइल्स आर डिसअपियर. सो टू फाइंड आउट अगेन, go to the start menu, go to the open the PowerPoint. ठीक है, simply open the PowerPoint. We had opened the PowerPoint. Now go to the office button. When you go to the office button, the right pane into your office buttons menu, the right pane shows the name of your presentation जो भी आपने यूज़ किए हैं. सो हमारे प्रेजेंटेशन का नाम था द टाइगर, राइट. जस्ट क्लिक ऑन इट, वी विल गेट द टाइगर अगेन. ठीक है, तो सेव करने का एक तरीका वो था. नाउ द सेकेंड स्टेप, इन द ऑफिस बटन वी विल गॉट द सेव एंड सेव एज. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन you are saving your file for the first time, so we use the save option. Okay, when we want to make a copy of the same file, we want to save, so we use save as. ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ. We have already saved the file. Now we are going to save as. We are going to use the save as. ठीक है, अब मैं इसका नाम द टाइगर 01 देती हूँ. ठीक है, हाँ, सेम जगह पर. नाउ सेव इट, क्लोज इट. नाउ वी आर गोइंग टू सी वेर इज आर. सिंपली स्टार्ट बटन, go to the my computer. Now we have to find the documents. Where is the document? This is the document. Click on it. See, यहाँ पर मेरी दो फाइलें दिखा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने यूज़ किए थे सेव, जब हम फर्स्ट टाइम हमारी फ़ाइल सेव कर रहे थे उसके लिए. देन सेव एज हमने यूज़ किए टू मेक अनदर कॉपी बनाने के लिए. सो एज यू कैन सी देयर इज़ 2 फाइल्स राइट नाउ. एक तो हमने सेव किए थे, सेकेंड वन वॉज सेव एज टू क्रिएट द सेम कॉपी ऑफ द सेव फाइल. ठीक है, सो आई होप you understand how to save the file into the computer. Okay, thank you students. In our next video we are going to move further. Same file में हम next slide add करेंगे और उसके बाद एक presentation create करेंगे. Thank you students.